Good evening and warm welcome to the special edition on preview of quarterly earnings. Over the last two quarters, our markets have corrected sharply following quarterly earnings announcement. Several factors contributed to this drop, pushing the market down from 26,000 to almost 21,500, 22,000. It's important to remember that earnings play a significant role with a 60% weightage on whether we view the market as bearish or bullish, driven by greed or fear. Additionally, globally macroeconomic trends have been negative over the past 6 months, but most of them are starting to shift in our favor. Now, we are hoping some relief from quarterly earnings or guidance. Simply hoping will not serve the purpose. To gauge this, we need to make some forecast based on channel checks to estimate how corporates, companies will report their fourth quarter earnings. To help us with this, we have Amit here. So let's ask Amit for his insights on analysis on fourth quarter earnings outlook. Over to you, Amit. Yeah, thank you, Shrikant. We will just open the presentation. Yeah. देखो, जो लास्ट 6 मंथ्स में निफ्टी में गिरावट आई है और जो लास्ट लेटेस्ट वर्ल्ड में जो ग्लोबल ट्रेड का सिचुएशन है, उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि अभी मार्केट का पूरा नजर होगा फोर्थकमिंग Q4 नंबर्स पे, विच में सेट द टोन फॉर मार्केट सेंटिमेंट गोइंग फॉरवर्ड. बट जो हमने एनालिसिस किया है, जो हमने नंबर्स निकाले हैं, उससे ऐसा Q4 के लिए नंबर्स इतने एनकरेजिंग नहीं लग रहे हैं. कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस ऐसा लगता है कि इस क्वार्टर भी थोड़ा सा स्लगिश रहेगा और प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा सा म्यूटेड रह सकता है बहुत सारे सेक्टर्स के लिए. नेट इनकम हमारा जो KI यूनिवर्स का है, वो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो खाली 0.7% ईयर ऑन ईयर बढ़ेगा. ज़्यादातर सेक्टर्स वीक की रिपोर्ट नंबर्स रिपोर्ट करेंगे, स्पेशली बैंक्स, केमिकल्स, कंज्यूमर स्टेपल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड ऑयल एंड गैस. हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वीक नंबर्स देंगे. और डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल्स, हेल्थ केयर, मेटल एंड माइनिंग, टेलीकॉम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्ट्रांग नंबर्स देंगे. ओवरऑल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो Q4 के नेट प्रॉफिट है BSE के, वो डिक्लाइन होंगे 2.1% ईयर ऑन ईयर, और निफ्टी इंडेक्स का डिक्लाइन होगा 0.6% ईयर ऑन ईयर. मोटा मोटी दिस क्वार्टर विल बी वीक फॉर मोस्ट कंपनीज, और थोड़े कंपनीज के लिए नंबर्स मॉडरेट रहेंगे. अगर हम मार्केट के ग्लोबल मैक्रो जो सिचुएशन है विल आल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल. फेड का जो रेट कट का डिसीजन रहेगा विल इम्पैक्ट कैपिटल फ्लोज एंड बोरोइंग कॉस्ट. Uncertainty around tariffs, particularly US-India trade negotiation, could also slow down the pace of capital expenditure in India. This external challenges, coupled with domestic conditions, indicate some potential headwinds for Q4 earnings. For now, we believe कि Q1 FY26 और जून क्वार्टर्स के नंबर है वो थोड़ा सा बेटर हो सकते हैं आफ्टर द म्यूटेड क्वार्टर इन दिस फाइनेंशियल ईयर. और जो महाकुंभ हुआ था मार्च क्वार्टर में, वो भी GDP के लिए काफी कुछ ऐड कर सकता है आगे की क्वार्टर्स में. अभी हम एक टेबल देखेंगे. हम लोग अभी ये टेबल देखेंगे. जिस टेबल में हम लोग देखेंगे कि कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर सकता है, कौन सा सेक्टर नहीं कर सकता है. Q4 FY25 में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वीक अर्निंग्स ग्रोथ फ्रॉम सेक्टर्स लाइक बैंक्स, primarily because
हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पॉलिसी कट रेट कट आया था उसके वजह से निम में थोड़ा सा कंप्रेशन आ सकता है। देयर आर आल्सो चैलेंजेस फ्रॉम डिपॉजिट ग्रोथ एंड एसेट क्वालिटी। कमोडिटी केमिकल्स में हम लोग थोड़ा सा म्यूटेड डिमांड और एडवर्स ऑपरेटिंग लेवरेज देख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में हम लोग वीक रियलाइजेशन और सीजनल हेडविंड देख रहे हैं। कंज्यूमर स्टेपल्स में वीक अर्बन डिमांड। ऑयल एंड गैस में वीक रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग मार्जिन्स। और ऑन द फ्लिप साइड हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिवर्सिफाइड फिनेंशियल्स के बेड नंबर्स अच्छे आएंगे, हेल्थ केयर सर्विसेज के, स्पेशली विथ हायर फुटफॉल्स इन एग्जिस्टिंग बेड्स एंड हायर रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। मेटल माइनिंग में हमने देखा है कि देयर इज इंक्रीज इन बेस मेटल प्राइसेस। और टेलीकॉम में हमने देखा है कि एडिशन इन वायरलेस बिजनेस काफ़ी स्ट्रांग है। प्लस रेवेन्यू पर यूजर भी इम्प्रूव हुआ है विच विल गिव अ गुड अर्निंग्स ग्रोथ टू टेलीकॉम सेक्टर इन दिस क्वार्टर। मैं और मेरे कलीग्स आगे के स्लाइड्स में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ ईच सेक्टर विल परफॉर्म। अभी ये टेबल दिखाता है कि हम लोग कि हाउ ईच सेक्टर विल परफॉर्म इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। हम लोग एक्सपेक्ट करें वीक नंबर्स फ्रॉम कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंज्यूमर स्टेपल, ऑयल एंड गैस एंड इवन रियल एस्टेट, while we expect strong numbers from consumer durable, diversified financials, healthcare, metal and mining and telecom। और हम लोग एक्सपेक्ट करें moderate numbers from sectors like autos, capital goods, electric utilities, IT services and pharma। नाउ लेट्स लुक एट द वैल्यूएशन सिचुएशन कि अभी वैल्यूएशन सिचुएशन कैसा है। ओवरऑल वी आर कॉशियसली बुलिश ऑन इंडिया फॉर FY26। मार्च 25 में जो रैली हुई थी वो उससे लग रहा है कि वो जो रैली थी वो इट वाज अ मिक्स ऑफ फंडामेंटल्स एंड सेंटिमेंट। थोड़े इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया होगा इन BFSI स्टॉक्स, थोड़े ने नरेटिव स्टॉक्स लाइक डिफेंस, EMS, फूड डिलीवरी, रेलवेज, वाल किसी को कंफर्ट मिला होगा विद reduced FPI सेलिंग इन द मंथ ऑफ मार्च। FPIs भी काफी रिटर्न हो चुके हैं इंडिया में, स्पेशली आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट इन ट्रम्प ट्रेड पॉलिसीज। ओवरऑल भी बिलीव जो इंडिया का मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो काफी स्ट्रांग है। बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन है वो भी मैनेजेबल है और फिस्कल डेफिसिट भी काफी कंट्रोल में है और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है। और रिसेंटली IMD ने फोरकास्ट किया है कि जो इंडिया में मॉनसून रहेंगे वो नॉर्मल से अबव नॉर्मल रहेगा और ये सिग्निफिकेंटली पुश कर सकता है कंजम्पशन एंड रूरल रिकवरी। ऑल दिस coupled with a sluggish global outlook with trade war and tariffs should provide a lot of tailwinds to the Indian market। हम लोग एक्सपेक्ट करें EPS ऑफ 1011 इन FY25, 1143 इन FY26, 1310 इन FY27। और करंट लेवल्स पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है 20.4 टाइम्स इन FY26 एंड 17.8 टाइम्स FY27, जो काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। FY26 में जो अर्निंग्स आएगी वो काफ़ी ब्रॉड बेस्ड हो सकती है अक्रॉस सेक्टर्स। और करंट लेवल्स में हमें काफ़ी सारा वैल्यू दिख रहा है बैंक्स और NBFCs में। तो जो ये जो करंट सिचुएशन है इसमें हम लोग इन्वेस्टर्स से यही एक्सपेक्ट करेंगे कि टू बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक, सेलेक्ट कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल, लोअर एक्सपोर्ट्स स्पेशली टू US, स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, healthy balance sheet and decent profit margins and return ratios। Any correction can be used to add quality stocks from a long term perspective। हम लोग अभी देखते हैं कि सेक्टर वाइज कैसा ईच सेक्टर विल परफॉर्म। आई विल टेक यू थ्रू कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एंड स्टेपल्स। Some there's some technical glitch, just 1 second।
Yeah. Yeah, sorry for the technical glitch. So I will let's see how sector-wise Q4 expectations are. I will take you through consumer staples and discretionary. Overall, हमारा view attractive है for Q4 FY25. Uh, but the ongoing weakness in urban consumption is likely to continue to weigh on value and volume growth of FMCG players in Q4 FY25. Rural growth stable है but improve नहीं हो रहा यहाँ से. There is also inflation in few commodities like palm oil, tea and coffee जो impact कर सकता है margins for the next 1 or 2 quarters. ओवरऑल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टेबल टू वीक परफॉर्मेंस फॉर कंज्यूमर staple companies impacted by persistent weakness in urban demand, margin pressure due to raw material inflation and adverse operating leverage. डिमांड एनवायरनमेंट सिमिलर रहेगा जो हमने Q3 में देखा था. In case of discretionary, we are expecting strong growth in canteen store department, which should benefit Varun Beverages. We are also expecting a resilient performance from Pidilite cigarettes and alcohol beverages. Stocks to watch out here are Pidilite, ITC, and United Spirits. We expect some moderation in jewelry demand and continued weakness in QSR and paints, and a moderate quarter for the footwear sector. हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं गुड क्वार्टर फॉर वरुण बेवरेजेस, पिडिलाइट एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स, अ मॉडरेट क्वार्टर फॉर युबिलेंट, मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर एंड टाटा कंज्यूमर, एंड अ वीक क्वार्टर फॉर कोलगेट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्यूएसआर एंड पेंट्स. टॉप पिक्स हमारा है इस सेक्टर में गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर, टाइटन, वरुण बेवरेजेस, पिडिलाइट, यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड सफायर. That's it from my side. Over to Amar. Okay, so next sector is metal and mining, and in this sector, the price trend were mixed bag for the ferrous and non-ferrous player during the quarter. If you see in the steel front, so we are expecting कि margin improve होगा Q on Q 1,200 per ton, जो हमारे coverage में stock है, mainly led by the lower coal cost and better flat product prices. However, हम देख रहे हैं कि लॉन्ग प्राइसेस का जो लॉन्ग प्रोडक्ट प्राइसेस उसके प्राइस थोड़े म्यूटेड रहेंगे. सो एवरेज अगर हम स्टील प्राइसेस का रियलाइजेशन देखो तो वी कैन सी दैट 300 पर टन इंक्रीज दिख रहा है क्यू ऑन क्यू में, एंड कॉस्ट विल डिक्रीज ड्यूरिंग द क्वार्टर. अगर हम वॉल्यूम फ्रंट में देखें तो वी आर एक्सपेक्टिंग वॉल्यूम फ्रंट में वॉल्यूम फ्लैट रहेगा, 2% क्यू ऑन क्यू वॉल्यूम ग्रोथ रहेगा ड्यूरिंग द क्वार्टर, एंड विच वी आर कंपनी कवरिंग. And we are expecting the decent demand in domestic. However, we see a substitute exports. On the non-ferrous front, base metal company to show a mixed trend due to the volatile commodity prices in 4Q FY25. On the Q on Q basis, zinc and aluminum prices decreased by 7 and 25 respectively, while aluminum price increased 1.7% Q on Q in the US term. In this space, we have a Jindal Steel and Power and Hindalco is a top picks, and we have a buy rating on that. On next sector, auto and automobile sector. So we expect auto OEMs revenue to increase 5%. Yeah. So we are expecting OEM का revenue का growth जो 5% we are expecting, and low to mid single digit year-on-year production growth in the PV and commercial vehicle and two-wheelers. Teen increase in the tractor production volume,
And gross margin हम थोड़ा decline expect कर रहे हैं in the especially for the OEM space. And we expect weak quarter for the auto ancillary and muted domestic and global auto growth. We expect M&M and TVS Motor to report strong growth and accept the tire and battery companies to report a weak quarter. So in this space, we like M&M, Hyundai Motor and Maruti Suzuki. So next slide, over to Pankaj. Thank you, Amarjit. So, good evening, everyone. So, I'll take you through capital goods sector, जहाँ पर overall sector पे हमारा cautious view है. लेकिन if you look at capital goods sector, there are multiple businesses and so the views are different from the different companies and the earning expectations are also different. So, when we look at the select emerging themes in the capital goods space, where we see capex pickup. But in the conventional sectors, overall, we are looking at a tapered capex. So अगर T&D theme की बात करें तो वहाँ पर हम growth देख रहे हैं and this is supported by the strong demand environment. So in this, the likely beneficiary in terms of profit and overall growth is Siemens, CG Power, and ABB, particularly for their power segments. KC and Kalpatru are expected to report a strong order inflows. Thermal power space में we have seen a strong demand, particularly for BHEL. We are expecting a high double-digit growth on a YOY basis. For L&T, particularly, I would spend some time that where the company has seen a strong order inflows, and that is led by the infra segment, and they have got a ultra mega order in the Middle East. So that is driving their order book. And overall on the execution front also, वहाँ पर हमें overseas orders के जो execution है काफी strong लग रहे हैं. So that will drive 18% growth in the EPC revenues and overall console पे भी हम 16% revenue growth देख रहे हैं. Margins benefit होंगे because जो fixed price contract है वहाँ पर lower commodity prices के benefit मिलेंगे. So overall for L&T we expect margins as well. दूसरा इंपॉर्टेंट स्टॉक जो हम काफी एग्रेसिवली पुश कर रहे हैं वो कमिंस है और यहाँ पर हमारा लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है. ओवर दिस क्वार्टर probably would be slow in terms of because of the normalization in the order from the earlier instance of pre-buying due to the change in the emission norms. So इसकी वजह से we are expecting a low double-digit growth for Cummins. BEL in defense segment, BEL and Cochin Shipyard, these stocks are under coverage and where we are seeing muted order inflows. इनफैक्ट बीएल ने तो अपने नंबर्स भी एक बिजनेस अपडेट में डिक्लेयर किया है ऑर्डर बैकलॉग सो दैट इज इम्प्लाइंग रिलेटिवली म्यूटेड इनफ्लोज बट फॉर नेक्स्ट ईयर देयर आर एक्सपेक्टेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लोज फ्रॉम QRSAM सो दैट विल ड्राइव द ग्रोथ. रोड सेक्टर में अवॉर्डिंग जो है अभी भी म्यूटेड है एंड देयर आर एक्सपेक्टेशन दैट द ऑर्डरिंग विल इम्प्रूव इन द कमिंग क्वार्टर्स. सो इस क्वार्टर में IRB का हम म्यूटेड परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं. EMS जो सेगमेंट है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में वहां पर वी आर सीइंग अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रफली 77% ग्रोथ इन द रेवेन्यू फ्रॉम आवर कवरेज यूनिवर्स. यहाँ पर एम्बर जो कि AC डिमांड जहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग है दैट विल ड्राइव देयर ग्रोथ एंड फॉर डिक्सन वी आर सीइंग इंक्रीज्ड मोबाइल कंट्रीब्यूशन विल ड्राइव देयर ग्रोथ. अदर EMS कंपनी लाइक केन्स एंड सिरमा वहां पर हम स्टेडी डोमेस्टिक डिमांड देख रहे हैं सो दैट विल ड्राइव देयर ग्रोथ. सो कैपिटल गुड्स स्पेस में हमारा टॉपिक है कमिंस इंडिया वेयर वी हैव अ बाय विद अ फेयर वैल्यू ऑफ 3700 रुपीज. Raj, we like the stock has corrected and the stock is where we have a fair value of 740. Thermax has also corrected and that we like at these levels and we have fair value 3600. And NCC where we have a buy with a fair value of 285 where the company has reported a very strong order inflows in the recent past. Next slide, please. So real estate sector, briefly, I would touch upon as where we have attractive view and we expect overall healthy pre-sales in our coverage universe. इनफैक्ट इंडस्ट्री डेटा भी जो हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि देयर वुड बी अ स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन इन द लॉन्चेस एंड द सेल्स इन द फोर्थ क्वार्टर. In terms of launches, we are seeing big launches from Godrej Properties, Brigade, Prestige, and Shobha. So Godrej का करीबन 4400 crore का pre-sales contribution we are expecting from the launch of Noida, Gurugram, and Hyderabad and Pune project.
Brigade, maybe have where the company has launched Etridia and Orchid, where the overall GDV is around 3,000 crores. So that will drive the growth. Prestige, we are expecting 4,000 to 5,000 crore of pre-sales contribution from which is contributed by launches from Mumbai, Bangalore, and Hyderabad. Uh, in terms of commercial real estate, we are expecting improved occupancy, and we are also expecting healthy improvement in the rentals and earnings. So real estate space में हमारा जो topic है उसमें DLF है where we have buy with a fair value of 1,020. Macrotech developers where we have a buy and a fair value of 1,360, and Brigade with a fair value of 1,380. Next slide, please. Yeah. So electric utilities and renewable energy sector overall, we have a cautious view. So in this quarter, if you look at overall electricity demand has improved by 4% on a YY basis, with the peaked power demand has increased by 6%. Overall, nationwide, the capacity addition has seen a pickup in Q4. So January and February saw some 8.4 gigawatt of new capacity, and that's primarily driven by the renewable segment compared with the overall 20 gigawatt what these companies have reported in 9 months of FY25. So इसमें we are expecting NTPC and Power Grid to report a modest performance. So NTPC, we expect a weak generation of roughly 2% decline on a YY basis. Tata Power's earnings from the renewable portfolio will benefit from the higher capacity base and a strong execution, particularly in the solar segment. Other solar stocks like Wari and Premier Energy, so where overall we expect a strong demand led by the rapid solar capacity addition and commission of new capacity, particularly in Wari, that we have seen, and improving utilization and the stable module and cell pricing. So these will drive the performance of these companies. Overall energy segment में हमारा जो buy recommendation है that is on Acme Solar where we have a fair value of 320 rupees. So this is all from my side. Over to Sumit. Thank you very much. Thanks for a detailed explanation. Now moving to IT sector, definitely a lot of questions might be there in your mind, given the geopolitical scenario which is going for in the IT sector particularly. So one sample of results which TCS declared, we have seen that, and the numbers has been quite muted. It was a muted quarter, weak headline numbers and a margin miss. So, and the demand outlook also looks a little hazy because of the ongoing tariff war. The back and forth tariff changes which the US government is doing is definitely negative for the sector. And we expect retail, logistics and manufacturing to be significantly impacted due to the high cost structure and disruption in the global supply chain. Now, going forward, will the reversal of those remaining tariffs will happen? If that happens, definitely it will be a big positive and the uncertainty will go away. We are waiting for that to happen. Just as I mentioned, the sectors which will get most impacted. Now look at the companies which has got a higher exposure to it. So HCL Tech Mahindra, LTI Mindtree, and Infosys have got higher exposure to retail and manufacturing, while Coforge, Persistent, and Mphasis have lower exposure. The focus will be on the annual guidance of companies of the likes of Infosys and HCL Tech. So that is very important because that will give you a clear idea how the company is viewing FY26 earnings growth and revenue growth. At the same time, what is their clients saying? So we will be able to read between the lines over there. The tariff scenario can play out in numerous ways. We have to wait and watch how it will pan out. Given the recent fall in the stock prices, we believe TCS, Infosys, and Coforge are really good bets you can bang on from a longer term perspective. Now moving to oil and gas sector. It's a very diversified sector. We have upstream companies, midstream, and downstream. So we will look at the whole bucket. We expect Q4 FY25 to be likely a weak quarter, given multiple reasons behind it.
Let's talk about a Reliance Industries, which is a conglomerate. We expect consolidated operating profit to rise by a modest 3.5% year on year, but sequentially it will be flat, mainly driven by further benefits from the telecom tariff hike and recovery in retail. Refining margins are under pressure, so that is not a good sign for so far the oil and gas refining business is concerned. Moving to ONGC, we expect ONGC's operating profit to rise by 11% year on year and 2% sequentially on higher oil and gas realization and a weaker rupee. Now, this is particularly restricted to the Q4 I'm talking. Suppose that the crude has corrected, which is not good for ONGC. Coming to oil marketing companies, higher oil, weaker rupee is going to hurt. Reported GRMs will be likely weak. So, what is the relationship between GRMs and oil prices? A lot of investors have asked me over multiple times. So let me give a quick update on that. If your crude prices are continuously falling, then the raw material for refining companies are coming down. So in the short term, you might see some inventory losses, but from a longer term perspective, if you see the crude remains at a lower level, that is quite positive for refining companies, provided the product prices remain better and the spread increases. When I'm saying spread, I mean to say GRMs. So if that happens, then definitely it's a very positive sign for refining companies. Why is it so? Because their raw material cost come down, their operating cost come down, their working capital improves. In fact, their interest cost burden also goes down. Now, reported number likely looks stronger for IOC because of weaker base and weakest for BPCL. In the oil and gas space, one can look from a longer term perspective, 1 year plus, and our top picks are Reliance Industries and ONGC. Thanks from my side. That's all from my side. Over to Veer. Just back jump. Sure. Thank you. Sorry. Yeah. Arun. Construction material, the sector we are cautious. Definitely, we expect the cement industry demand to grow by 10% year on year in Q4 FY25. Prices improved in most regions, except for South for second consecutive or second successive quarter. One of the most important thing to monitor in cement or construction is the cost per ton. We expect that to decline. So if your cost is declining, that is positive. And why is it so? Because of the operating leverage. That means your scale is rising, so the per unit cost is going down. Now, seasonal tailwinds on demand supported by price hikes and muted cost to improve margins sequentially in Q4 FY25. As I mentioned, your at one point your prices are going up, and on the other hand, your cost per unit is going down. So what does it mean? What will the end result of it? Your operating margin will improve, and that is what we expect in Q4. We expect a sequential improvement in the operating margin per ton to around 250 rupees per ton. Now, recent rise in the petcoke prices, margins are expected to have a weak in the near term. Particularly, if you look, the stocks have already moved up, and we find the sector to be expensive. So that is why we said we have been cautious on it. And Shree Cement and Ramco Cements are our top sell on expensive valuation. Thank you. Next, please. Yeah, thank you, Sumit sir. Hello to all. So अभी हम banks की बात करते हैं and what we expect from banks in Q4 FY25. So firstly on the bottom line we expect banks Q4 FY25 में net profit growth होगा वो काफी slow होगा बैंक का ये quarter में. And why the profit growth would be slower? इसके दो major reasons हैं. Number one reason is कि we expect banks के जो loan growth है would be muted and slower versus previous quarter in Q4. So अगर हम सिस्टम ग्रोथ की बात करें लोन ग्रोथ की सो एज ऑफ मार्च बैंकिंग सिस्टम लोन ग्रोथ grew by 11% which has been lower versus previous quarter.
ये जो 11% का ग्रोथ है, दिस हैज बीन लेड बाय रिटेल एंड मिड कॉर्पोरेट्स। और जो लार्ज कॉर्पोरेट्स है, इट कंटिन्यूज टू बी अ लगार्ड। सो लार्ज कॉर्पोरेट से डिमांड की काफी कमी है, इसके वजह से ओवरऑल लोन ग्रोथ में भी हमें स्लो डाउन दिखाई दे रहा है। ऑल्सो ओवरऑल लोन ग्रोथ में डिमांड तो स्लो है ही, बट ऑल्सो ड्यू टू टाइट लिक्विडिटी सिचुएशन और बैंक्स भी अपने फिल्टर्स को थोड़े टाइटन कर रहे हैं। ये कारणों की वजह से भी लोन ग्रोथ ओवरऑल थोड़ा स्लो हमें देखने मिलेगा इन Q4। अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो ये सेकेंड रीजन है व्हाई नेट प्रॉफिट ग्रोथ वुड बी लोअर, क्योंकि वी एक्सपेक्ट कि द नेट इंटरेस्ट मार्जिन इन Q4 टू बी द बैंक्स वुड सी सम कंप्रेशन इन नेट इंटरेस्ट मार्जिन। सो व्हाई कंप्रेशन? इसके भी दो रीजन है। नंबर वन, वी एक्सपेक्ट द यील्ड्स ऑन लोन्स फॉर द बैंक्स टू गो डाउन। Now RBI has been cutting the repo rates, दो repo rate काट दिए हैं 25 basis each के, and therefore yields on loans for the for the banks would go down. So this is one way why the margins would decline. And on the other aspect, we also expect कि cost of funds में एक pressure हमें देखने मिल रहा है continuously, और ये quarter में भी देखने मिल सकता है, क्योंकि fixed deposit has been growing faster than your savings account, and fixed deposits are a higher cost of funds for the bank, and therefore incrementally थोड़ा cost of funds में भी हमें pressure देखने मिल रहा है, and therefore due to yields on loans falling and cost of funds continued pressure on that aspect, margins would see another compression in this quarter. Asset quality on a positive note will continue to remain stable for banks. सो बाउंस रेट्स जो भी हम ट्रैक करते हैं डेटा, द बाउंस रेट्स आर होल्डिंग वेल फॉर बैंक्स, विच इज अ गुड साइन। कॉर्पोरेट एसेट क्वालिटी रिमेन्स क्वाइट प्रिस्टीन। रिटेल लोन्स में भी एसेट क्वालिटी में ऐसा कोई हमें बड़ा हिकअप देखने नहीं मिल रहा है। यस, द माइक्रो फाइनेंस लोन्स जो है, इट कंटिन्यूज टू रिमेन एन एरिया जो हमें मॉनिटर करना है, and banks with high exposure in microfinance will continue to report slippages on a higher end. पर वहाँ भी हमें एक अर्ली साइन ऑफ पीकिंग आउट देखने मिल रहा है। सो विल ऑल्सो क्लोजली वॉच आउट के बैंक का क्या कमेंट्री है ऑन द माइक्रो फाइनेंस साइड। रिटेल अनसिक्योर ऑल्सो बीन हैज अ पेन पॉइंट फॉर सम ऑफ द बैंक्स, सो वहाँ भी हमारी क्लोज नजर रहेगी। बट ये जो दोनों सेक्टर है, माइक्रो फाइनेंस एंड अनसिक्योर रिटेल लोन्स, इसमें जो बड़े बैंक्स, इनका हिस्टोरिकली शेयर काफी लो रहा है, एंड देयरफॉर दे डू नॉट इम्पैक्ट दीज लार्ज बैंक्स टू सच एन एक्सटेंट जितना वो स्मॉलर बैंक्स को करता है। Therefore, bottom line, asset quality, we expect banks to remain stable. And therefore, overall, we believe के net profit में थोड़ी muted growth होगा, but asset quality is stable, and asset quality is one of the key area which we have to look at. Macro environment is also improving slowly and steadily for the banks, which is again a positive. Overall, sector का valuation is attractive, taking into consideration all these aspects, and therefore we continue to like the sector. We prefer the top private banks in this space, which you can see from your scene. So this was a brief on the banks. Shashwat will cover the non-banking space. Yes, thank you, Veer. So, talking about NBFC, so for NBFC, we expect that this fourth quarter would reflect seasonally a better trend, though underlying momentum will be bit moderated. अगर हम ग्रोथ की बात करें तो हम देख रहे हैं कि जो डिसबर्समेंट का ग्रोथ होगा वो सबड्यूड ही रहेगा। इसके रीजन ये होगा कि जो इसका रीजन ये है कि हम सेवरल सेगमेंट्स में स्लो डाउन देख रहे हैं, विच इंक्लूड्स प्राइम हाउसिंग लोन्स, व्हीकल फाइनेंसिंग। ऑल्सो इसका एक वन ऑफ द रीजन है इंक्रीज टाइटनिंग इन अनसिक्योर्ड और पर्सनल लोन्स। अगर हम लोन ग्रोथ पे बात करें तो हमें लगता है कि इस बार मोस्ट ऑफ द एनबीएफसी की ग्रोथ वुड बी इन द रेंज ऑफ 16 to 31% in Q4 FY25, which is a bit lower from 18 to 33% which was in Q3 FY25 and 20 to 35% which was in Q4 FY24, which is a year before this. Now talking on asset quality, seasonal factors such as winter crop collection, government project payouts, and performance incentives are expected to support the asset quality improvements in this quarter. अगर हम अब मार्जिन्स पे बात करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करें कि जो नीम्स होंगे वो सिक्वेंशियली स्टेबल ही रहेंगे। जो लार्ज एनबीएफसी है जिनका लायबिलिटी साइड पे बोरोइंग्स का बैंक से बोरोइंग्स है उसका एक्सपोजर 15 to 20% का होगा, जो रेपो रेट से लिंक्ड होगा उनको बेनिफिट मिलेगा
reducing fund cost ka towards the end of this quarter, and also going forward, as we know that RBI has done 2 rate cuts, which was done previously, and recently in the first week of April the other cut was done. Also हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मैनेजमेंट की जो भी कमेंट्री होगी वो डिमांड ट्रेंड्स पे वो थोड़ी कॉशियस रहेगी, और इवन कॉशियस रहेगी even as regulatory conditions are turning incrementally accommodative. So हम इस सेक्टर के टॉपिक्स की बात करें तो हमें लार्ज कैप नेम्स में श्रीराम फाइनेंस पसंद है, और आधार हाउसिंग फाइनेंस, होम फर्स्ट और 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस मिड और स्मॉल कैप स्पेस से पसंद है. नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट कैपिटल मार्केट स्पेस. सो ये जो Q4 था, we saw full impact of recent regulatory changes adversely affecting most of the capital market intermediaries, including AMCs and RTAs. अगर हम स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड्स पे पहले बात करें तो म्यूचुअल फंड्स का जो अर्निंग आउटलुक है, हेडलाइन ईयर ऑन ग्रोथ है, इज लाइकली टू रिमेन सबड्यूड अक्रॉस ऑल द AMCs. उनके AUM ट्रेंड की बात करें तो हम देखते हैं कि इक्विटी AUM is likely to decline sequentially. हम लिस्टेड AMCs पे बात करें तो HDFC एंड Nippon AMC are better placed versus ABSL and UTI AMC due to the stronger performance in 1 year and 3 year performance bracket, or relatively stable flows of cash. अगर रेवेन्यूज पे बात करें तो रेवेन्यू yields are likely to fall quarter on quarter due to adverse AUM mix shift, preliminary due to reduction in equity oriented AUM और MTMs के impacts की वजह से. अगर हम RTAs की बात करें तो हमें लगता है कि CAMS और KFinTech are likely to be impacted by industry wide weak AUM growth, and with CAMS would be more adversely affected due to its higher share in the MF space. इनके नॉन MF बिजनेस की बात करें तो both the players are expected to benefit from the continued growth in non MF business segment. अगर हम फाइनली रेटिंग एजेंसीज की बात करें तो Q4 में हमें लगता है कि रेटिंग एजेंसीज बहुत रोबस्ट परफॉर्मेंस देगी ड्यू टू पिकअप इन द प्राइवेट डेट इश्यूएंस, स्ट्रॉन्ग कमर्शियल पेपर एक्टिविटी एंड इम्प्रूव्ड बैंक क्रेडिट ग्रोथ. अर्निंग आउटलुक की बात करें इन दोनों के तो बोथ क्रिसिल एंड इकरा आर लाइकली टू रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग कोर अर्निंग्स ग्रोथ सपोर्टेड बाय इफेक्टिव कॉस्ट मैनेजमेंट. और इनमें एक कंसर्न है कि इनका जो नॉन रेटिंग बिजनेस सेगमेंट की रेवेन्यू विजिबिलिटी इतनी नहीं है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम डाइवर्सिफाइड स्पेस एंड कैपिटल मार्केट स्पेस. ओवर टू रीनी. थैंक यू वीर. अब केमिकल सेक्टर की बात करें तो ऑनेस्टली डिमांड अभी भी म्यूटेड है सेक्टर में, बट वॉल्यूम्स हैव स्टार्टेड टू इंच अप फ्रॉम लो लेवल्स. So we are expecting modest quarter-on-quarter growth in operating earnings. Year-on-year growth will vary क्योंकि last year का base काफी low था for some companies. So from our coverage, SRF and Vinati Organics are likely to post better results. SRF को support मिलेगा from a strong refrigerant demand in India and firm prices. And Vinati and SRF also saw export pickup, but it could be due to a pre-buying ahead of US tariff changes. So not necessarily a demand revival. PI industries should do well. Names like Aarti, Aether Industries, Atul, Clean Science, Navin Fluorine, and Neogen may see decent sequential EBITDA growth. But year-on-year numbers, especially PAT, could be lower for Aarti, Deepak Nitrite, and Neogen. SH Kelkar might see some recovery from last year's weak base, but earnings may still stay below its last year's levels. अगर agrochemical space में देखें तो Q4 is a seasonally weak quarter. Inventory build-up, soft pricing, and weather issues continue to weigh on demand. Export volumes are slowly recovering though. Among companies, UPL may show the fastest growth, but that's mostly base effect. Godrej Agrovet and Rallis could post mixed to modest results, while Bayer Crop Science may see margin pressure. Our topics from this space are SH Kelkar, PCBL, and Godrej Agrovet. Now coming to pharma and healthcare space. Next slide, please.
या तो फार्मा कंपनीज के लिए क्वार्टर काफी ठीक ठाक लग रहा है। यूएस जेनेरिक्स प्राइसिंग स्टेबल रही और वॉल्यूम्स भी इम्प्रूव हुए हैं। यूएस सेल्स में 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इंडिया बिजनेस में 11% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ डिस्पाइट जैन फेब थोड़ा स्लो होने के बाद। एपीआई प्लेयर्स का परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर हो सकता है विद 6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ और सीआरडीएमओ सेगमेंट में तो फुल सीम्स गुड सीम्स स्ट्रॉन्ग। दीवीज लैबोरेटरीज लॉरस ब्लू जेट पिरामल साई लाइफ साइंसेस एंड सिंजिन शुड डू वेल। हॉस्पिटल्स का ग्रोथ अराउंड 16% ईयर ऑन ईयर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा फुटफॉल्स नए बेड्स और थोड़ा बेटर आरपॉप हेल्प करेगा। किम्स और नारायणा हृदयालया का एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड ग्रोथ अच्छा लग रहा है। एंड लास्टली डायग्नोस्टिक्स में 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिख सकता है। बी टू सी डिमांड और वेलनेस टेस्ट स्ट्रॉन्ग है लेकिन मार्जिन थोड़े प्रेशर में रह सकते हैं ड्यू टू बी टू बी कॉम्पिटिशन। So that were our expectations from Q4 results. Now we can begin with our Q&A session. We have quite a few questions already, so let's quickly start with the questions that we have. First question is from Akash. Akash wants to know view on technology sector. Our IT sector analyst Sumit Pokarna can help on that. Sumit sir, over to you. Yeah, there was some disturbance. Can you please repeat the question? Yeah, sure. So, participant Akash is asking for views on technology space. Yeah, so technology, if you see, the IT sector per se is in doldrums because of the ongoing tariff war. But with the latest changes or some relief which has been given by the Trump, I think we need to wait and watch and how the scenario pans out. The tariff war is led to impact the sector in multiple ways. First is heightened macro uncertainty. So if macro uncertainty is there, the clients will postpone their decision or delay their decisions. Secondly, if you see the tariff has been earlier imposed on hardware and other parts, so that also becomes a little expensive now, but that has been taken care of partly. So if your a company has got certain budget to spend on IT, and portion of it was allocated to hardware earlier, now that portion has gone higher. So that will not come to Indian IT services company because they are more into services rather than the hardware part of it. So first angle is that. Second, when it comes to the larger players like hyperscalers, maybe it Microsoft, maybe Google, so they will not compromise on their margins significantly. So the impact has to be borne by somebody which is IT services company. So they will get impacted out there also. So definitely the situation is little fragile. There are concerns from AI part also because once the AI, with the AI implementation, there will be pressure on the realizations. Obviously, you are going to get benefited on the cost part, but definitely the client will pass on certain benefits to us, so the realization will also go down there. So given the current scenario, we believe there are certain concerns out there, but we need to wait and watch how the scenario unfolds, how the changes happens in the global world, and that will decide the ongoing demand environment. But one thing I can say with surety that IT services demand is going to remain strong. Now we need to see companies which has got a lesser exposure to retail manufacturing. So those companies are going to get impacted less. Companies which has doing the core work and not the discretionary work, they are going to get immune to this. So we have to be very crystal clear and do a bottom-up approach rather than a macro approach that entire sector will do well. No, it will not. It will be not like that. So we need to be very, very clear which company has got exposure to which part of the vertical. So based on that, we have shared the top stock ideas with you also. That's all from my side. Thank you, Sumit sir. Akash, I hope this helps. Next question is from banking space. Veer, this is for you.
Krishnaswamy Venkatesh is asking, please enlighten on HDFC Bank and ICICI Bank. Sure, Rini. Thank you. So, as mentioned in my slide when I was discussing the banking space, both these stocks are one of our best ideas, and we really like both the names. Now it's important to understand that banking or lending as a sector is very macro linked, and therefore, if we can catch the macro well, we are able to catch these good quality banking stocks well. If we speak about the current macro conditions with liquidity seeing improvement, repo rates being cut, we just have this CPI number in the month of March, and even that is under control. So if the macro does well, automatically the risk of slippages also goes down. And slippages is one of the most important criteria to track for a bank. And therefore, when macro goes right, all these good banks, they tend to also perform good. Yes, in the near term, we do are seeing some margin compression, which will happen because of the repo rate cut. But it has been observed that over the medium term, asset quality is the one which markets really appreciate. And therefore, we don't see that risk happening for these good quality names, at least in the medium term. On top of that, we are getting these names at a very good valuation. And therefore, we continue to maintain our view that we like both these banks, HDFC and ICICI Bank. And we have a buy rating on both. Thank you, Veer. Next question is from Vaibhav. Vaibhav wants views on Angel One. Shashwat, would you like to take this one? Yes, Rini. So talking about Angel One has evolved into one of India's largest booking platforms with over 300 crore clients. It ranks third in terms of active clients, and it has around 20% volume market share in India's highly competitive broking industry. So we have recently initiated the coverage on Angel One uh, with a buy rating and fair value of 2800 rupees. So among digital brokers, Angel One, like other digital brokers, Angel One has also seen excellent success and is scaling up broking over past 4 5 years while maintaining its attractive unit economics. For FY24, its net revenues were around 3,300 crores compared to the range of 450 crores to 500 crores during FY 2018 to 2020. However, revenue diversification is likely to be the first priority for all large brokers over the next few years, like cross-selling, wealth management, AMCs, and lending business. For Angel One, we built a share of fee-based income to rise to 10% by FY 2030 expected, which is currently around 2%. So also there are several near-term challenges at industry level. If we talk about FNO regulations will render near-term earnings projection quite unpredictable, leading to an unclear handle of fair valuation. A weak industry environment could create possibility of price hikes, even though conditions that drive it remains a bit uncertain. Also, increased sensitivity to market levels given the dependency on cash and margin funding book, and the expense flexibility could remain constrained due to focus on customer acquisition and other committed costs like IPL branding and new initiatives. So we factored these uncertainties using a higher discount rate compared with other companies under our coverage. So we are valuing Angel One business at 21x March 2027 earnings, and its fair value is 2,800 with buy rating. Thank you. Kritik Patel को Zomato पे views चाहिए. Amarjit, would you like to share your views? थैंक्स रेनी सो बेसिकली अगर हम जोमेटो का देखें तो हमारा बाय रेटिंग है वी हैव अ बाय रेटिंग एंड फेयर वैल्यू इज 270 रुपीस एंड वी लाइक द जोमेटो देयर आर लॉट ऑफ रीजन फॉर दिस अगर हिस्टोरिकली जोमेटो को देखें तो कहीं ना कहीं दिखता है 1 सेकेंड अपने आप बंद हो गया ये या सॉरी सो हमें वी आर लाइक द जोमेटो और वी आर पॉजिटिव ऑन दैट क्योंकि अगर हम जोमेटो का देखें तो दो सेगमेंट है एक डिलीवरी बिजनेस है फूड डिलीवरी और दूसरा क्विक कॉमर्स है जो फूड डिलीवरी बिजनेस है कंटिन्यूसली हिस्टोरिकली ग्रो किया है और अपार्ट फ्रॉम दैट उनके मार्जिन कंट्रीब्यूशन है वो भी ग्रेजुअली ग्रो किए हैं अगर लास्ट क्वार्टर में देखोगे तो बहुत अच्छा नंबर था और मार्जिन कंट्रीब्यूशन इंप्रूव हुआ था बट क्विक कॉमर्स जो एक सेगमेंट है वो भी फास्ट ग्रो कर रहा है बट
इनिशियली अभी ड्यू टू द कंपटीशन हम लोगों को यहाँ पे कंपनी को स्टोर एडिक्शन करना पड़ रहा है, उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ रहा है, इसकी वजह से ओवरऑल उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अभी एज ऑफ नाउ थोड़ा कॉम्पिटेटिव सिनेरियो रहेगा, बट इवेंचुअली ये भी बाउंस करेगा। सो कंसिडरिंग द स्विगी एंड जोमेटो, वी लाइक द जोमेटो एंड वी हैव अ बाय रेटिंग ऑन दैट। Thank you, Amarjeet. Next question is from Madhukar. Madhukar wants to know views on JSW Energy. Pankaj sir, can you share your views, please? Yeah, sure, Rini. So JSW Energy पे हमारा सेल रेटिंग है एंड वी हैव अ फेयर वैल्यू ऑफ 400 रुपीज। रिसेंटली आप न्यूज़ को अगर रेफर करेंगे तो कंपनी हैज एक्वायर्ड O2 एनर्जी एंड in fact in the recent time we have seen the company has grown its portfolio through inorganic opportunities as well apart from the organic expansion। हमारा ऐसा मानना है कि जो रिटर्न्स प्रोफाइल है इन द ऑर्गेनिक पोर्टफोलियोज में आर रिलेटिवली बेटर वेयर वी सी मोर क्वेश्चन फॉर एनी मिस ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी और एनी रिडक्शन इन द रेवेन्यूज। So, due to that, also, organic growth profile is expected to be better than the inorganic. Or company is looking at doubling its portfolio, more than doubling, in fact, and they are going to achieve more than what they are targeting. But these all are factored in the price, and we have a sell rating on the stock and fair value of 400 rupees. Thank you, Pankaj sir. Pankaj sir, एक और question है from Rajesh Bane. He is asking for view on gold related sectors. What's the future? So maybe you can give view on companies like Titan, and then we can give views on gold related finance companies. Sure. So if you look at Titan, where the company has recently reported its update, business update on the Q4 results. So overall, अगर Q4 की बात करें तो volume front पे and the top line front पे it was better than our estimate. So jewelry sales जो है कंपनी ने करीबन 24% से ग्रो किया है, and this is ahead of our estimate of 14%. एंड इवन कंसेंसस एस्टिमेट्स भी थे 17 से 18%। तो यहाँ पर एक अच्छा ग्रोथ दिखा है। तो व्हाट हैज रिजल्टेड इन सच अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इज द वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द इंक्रीज इन द गोल्ड प्राइसेस। रफली 30 to 33% इंक्रीज हुए गोल्ड प्राइसेस में। एंड गोल्ड कॉइन्स की जो वॉल्यूम इंक्रीज हुई है वहां पर 65% कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है। बट इसकी वजह से क्या है कि ओवरऑल मिक्स जो है कंपनी का, दैट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस मिक्स इज आल्सो नॉट इन फेवर ऑफ द हाई मार्जिन सेगमेंट व्हिच इज स्टडेड ज्वेलरी वेयर दे मेक बेटर मार्जिन। सो ओवरऑल ये रिजल्ट मिक्स है गोल्ड प्राइसेस की वजह से। इवन रिसेंटली इफ यू लुक एट कल्याण ने भी अच्छे नंबर बिजनेस अपडेट दिए हैं। So this is positive for the jewelry company in terms of volume, but the profit we have to look at, and that's what the company is going to report in their Q4 final results. Titan पे हमारा reduce rating है and हमारा fair value 3045 है। Over to Veer. थैंक यू सर। सो गोल्ड लेंडिंग कंपनीज के बारे में अगर हम बात करें, सो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज अगर हम देखें इन द पास्ट 1 year हैज सीन अ रियली गुड अप्रिशिएशन इन देयर शेयर प्राइस। इसके हम दो कारण मान सकते हैं। नंबर वन इज दैट द गोल्ड प्राइसेस हैव बीन राइजिंग क्वाइट सिग्निफिकेंटली। जब गोल्ड प्राइसेस राइज होते हैं तो दीज कंपनीज कैन गिव मोर लोन्स ऑन द सेम गोल्ड, तो ऑब्वियसली देयर AUM वुड इंक्रीज, देयर प्रॉफिटेबिलिटी वुड इंक्रीज। दिस वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनीज ने अच्छा अप्रिसिएशन देखा अपने शेयर प्राइस में। सेकेंड रीजन इज दैट अगर हम लास्ट 1 year का परफॉर्मेंस देखें लेंडिंग स्पेस में, तो अदर सेगमेंट्स लाइक अनसिक्योर्ड एंड माइक्रो फाइनेंस स्पेस has been seeing some pain, and therefore investors would have find safe haven in these gold finance lending companies because they are safer secured assets, and their loan growth was also growing decently. These were two reasons why the entire pack of gold financials has been doing good. But recently there has been an update where RBI has come out with a new draft guidelines for these gold loan finance players, where basically there's a concept called loan to value LTV, which has been maintained at 75%, but the calculation to reach that 75% methodology has been changed. Now, I would not be going into the details of it, but in simple language, due to this new change in methodology, potentially the loan growth of these gold finance companies would decline a little, and also at the same time, the margin of these companies would also decline a little.
So this is like a near-term headwind for the stock for these players. This is still a draft guideline. Nothing has been finalized yet. But as the stock has already moved a lot, maybe in the near term, this could act as a potential headwind for these players. But Muthoot is a company which we still like from this space. So yeah, that's it from for on the gold finance part. Thank you, Veer. Now, due to time constraint, I'll take one last question, which is from IT space. Sumit sir, Bharat Jain is asking when to add IT stocks after results. Please advise. Yeah, so as I explained, there are two parts to it. There are concerns at one hand and there are valuations. तो concerns काफी हद तक स्टॉक प्राइस में डिस्काउंट हो चुके हैं. क्या क्या फुल्ली डिस्काउंट हो गए? आई विल से नो. वी विल वेट फॉर द क्वार्टरली रिजल्ट्स और उसमें कमेंट्री क्या आती है उस पर डिपेंड करता है. सेकेंडली वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल हो गए हैं. तो अगर वैल्यूएशंस को देखते हैं और एक लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं तो जब भी कोई पेन पीरियड आता है सेक्टर में अक्रॉस और मार्केट्स में, दैट टाइम ओनली हमको एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी मिलती है बाय करने के लिए. सो आई थिंक दिस इज द टाइम वेयर यू कैन बी सेलेक्टिव इन द स्पेस, बट यू कैन बाय क्वालिटी कंपनीज लाइक टीसीएस, इन्फोसिस एंड कोफोज. वेयर अब टीसीएस की बात करते हैं, क्यों बाय करना चाहिए टीसीएस. उसके बाद जो टीसीवी जो ऑर्डर बुक है उसके बाद इज सच ए स्ट्रॉन्ग, इतनी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी मिल रही है अपने को. सो वी कैन बाय दैट. क्या मैक्रोज इसके लिए अच्छे हो गए? वी विल से कि आज की डेट में ऑर्डर बुक अच्छी है, मैक्रोज इवेंचुअली इंप्रूव होंगे, बट वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दैट. इन्फोसिस में क्या पॉजिटिव, वैल्यूएशंस काफी इंप्रूव हो गए हैं, मैनेजमेंट का बहुत क्लियर फोकस है, प्लस कंपनी जो है काफी वर्टिकल्स में स्प्रेड आउट है. इसका केवल ये नहीं कि जो इम्पैक्टेड वर्टिकल्स है वहीं पे फोकस है, बट दूसरे वर्टिकल्स भी हैं जहाँ पे दे कैन हैंडल इट मच बेटर. तो वो जो अनअफेक्टेड वर्टिकल्स हैं वहां पे ग्रोथ लेके वो काफी हद तक कंपनसेट कर सकते हैं और वैल्यूएशन हमें रीजनेबल लेवल पे मिल रहे हैं. सो इन्फोसिस अगेन. कोफोज को देखते हैं तो वहां पे जो स्ट्रॉन्ग डील विंस उन्होंने किए, रिसेंट एक्विजिशंस किए हैं, जो कैपेबिलिटीज ऐड करी है उन्होंने, विच विल ऐड टू ए which is big boost to the company. They can cater to a multiple more verticals क्योंकि उन्होंने recent acquisitions किए थे. ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है उसकी. सो दैट इज ऑल्सो बिग टाइम पॉजिटिव फॉर कोफोज. सो हम जो कंपनीज आपको दे रहे हैं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है तीनों कंपनीज के अंदर. दे नो हाउ टू हैंडल सच सिचुएशंस. पास्ट में इन्होंने काफी ऐसे मिहेम देखे हुए हैं पास्ट में. प्लस इनका जो स्ट्रेंथ है, कैपेबिलिटी है, वो काफी स्ट्रांग है. फुल स्टैक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टीसीएस, इन्फोसिस. जो क्लाइंट कंसोलिडेशन हो रहा है, क्लाइंट बोलता है कि मुझे इतने सारे वेंडर्स नहीं चाहिए, मैं काम दूंगा लेकिन सेलेक्टेड वेंडर्स को दूंगा और दूसरे वेंडर्स को निकाल दूंगा. तो टीसीएस और इन्फोसिस को काफी बेनिफिट मिलता है बिकॉज ऑफ फुल स्टैक सर्विसेज विच दे प्रोवाइड. कोफोर्ज की कैपेबिलिटी इज वेरी स्ट्रांग. एग्जीक्यूशन इज द की फॉर कोफोर्ज. सो आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये तीनों स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में मस्ट ऐड करिए और ये आपको काफी हेल्दी रिटर्न देने चाहिए. ओवर टू यू रेनी. That was very well explained. Thank you, Sumit sir. Shrikant sir, would you like to give closing comments? And also, if I could squeeze in one question for you, there were quite a few questions on Tata Motors. So if you could also answer that one. Yeah, of course. Like lot of people, they are interested in knowing about Tata Motors. And if we just go through with the overall developments for Tata Motors, then the tariffs introduced during the Trump's administration could present some challenges for Jaguar Land Rover, as around 28 to 30% of their sales come from US market. Iconic models like Defender, Range Rovers, Range Rover Sports might face tough competition from brands that have locally manufactured. So these are the concerns which are there. Additionally, there are concerns about a possible slowdown in the broader US luxury car market due to economic uncertainties. This could lead to a potential earnings decline of 15 to 37%, which is, like, we can say a huge range that I'm giving, but this is how, like, we are
looking at the situation. So depending on the how tariff situation evolves, and that's the reason we are like cautious on the stock and the performance of the company. My advice is that if there is a very long-term view of more than 1 year, then certainly we should look for adding Tata Motors at current levels, but the view should be more than 12 months. Okay. Whenever in the past I have seen that the stock has fallen vertically uh, to the lowest low levels, we saw some developments and eventually company managed to recover back. And in fact, most of the time, the company has broken its previous all-time highest level. This time also the fall is because of some external news flow, which is not in anyone's control. But company knows that how to fight and how to handle the situation. Okay. So, but again, then it depends completely upon the overall conviction of anyone's on the company. So if you have like conviction that this company can again do well, certainly you should look for adding the stock with a long term, with a view of more than 12 months. With a very short term view, we are advising Mahindra and Mahindra over Tata Motors. Their number of triggers, I'm not going to talk about those triggers, but the company is doing really well on all fronts. And we should look for adding Mahindra and Mahindra at current levels instead of adding Tata Motors. तो जैसे मैंने कहा, महिंद्रा एंड महिंद्रा हमें बुलिश लग रहा है, फंडामेंटली काफी अच्छा है, मॉनसून भी आ रहा है, प्रेडिक्शन भी अच्छा है, ट्रैक्टर का बिजनेस ऑलरेडी वो अच्छा कर रहा है, तो हमें टाटा मोटर्स के बजाय हमें लगता है कि आप महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर फोकस करके चल सकते हैं। इसमें और भी कई सारे क्वेश्चन है जिसमें जी के बारे में भी बात हुई है। मैंने जी का भी ओवरऑल एक टेक्निकल पैटर्न देखा है और कई सारे रिपोर्ट्स जो मैंने देखे स्ट्रीट में, मुझे एक ही लग रहा है कि जो फेयर वैल्यू है स्टॉक की, उस फेयर वैल्यू के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई बड़ा मार्केट में बिकॉज ऑफ सम रीजन अगर करेक्शन आता है तो उस करेक्शन में जी को विद अगेन लॉन्ग टर्म व्यू खरीदा जा सकता है, बट लॉन्ग टर्म व्यू रखें, व्यू मोर देन 12 मंथ्स का रखें, तभी जाके आपको इसमें कुछ अपसाइड देखने मिल सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मार्केट की बात करें तो जैसे भी हमने देखा कि अर्निंग्स कैसे आने वाले हैं, और उसी के बेसिस पे अगर इस मार्केट के ओवरऑल सेटअप की अगर बात करें तो यहाँ से जो मार्केट है जिसमें हम और अगर तेजी देखेंगे तो उसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं। एक तो कि ये क्वार्टरली नंबर्स कैसे आते हैं उसके ऊपर है, गाइडेंस कैसे आता है। अगर यहाँ पे अगर नंबर्स अगर थोड़े पॉजिटिव आ जाते हैं एंड एक्सपेक्टेशंस को अगर बीट कर लेते हैं, बिकॉज क्या है कि 2 क्वार्टर से हमने काफी हेवी रिजल्ट्स फेस किए हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि एक व्यू बन जाता है, हम ट्रेंड को फॉलो करने लगते हैं, और इसी वजह से हमें लगता है कि अगर इसी पर्टिकुलर ट्रेंड को अगर ये नंबर्स अगर अब बीट करते हैं तो फिर हमें लगता है कि यहाँ पे एक मार्केट में तेजी बन सकती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो अभी आने वाले दिनों में रहेगा फॉर नेक्स्ट लेट्स से फ्यू डेज, एटलीस्ट 2 वीक्स, वहां पे न्यूज फ्लो काफी वर्क करेगा। और अगर ये न्यूज फ्लो अगर आई कैन से थोड़ा सा और अगर पॉजिटिव होते जाता है फॉर इंडियन मार्केट्स, तो हम शायद मार्केट्स को 24,000 तक भी जाते हुए देख सकते हैं। तो ये एक रेंज मार्केट की बन गई है। आई एम ऑफ द व्यू कि 22,000 का लेवल मार्केट ने काफी अच्छी तरीके से डिफेंड किया है फॉर द सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव टाइम, और बेस्ड ऑन दैट हमें लगता है कि मार्केट में ग्रेजुअल अपवर्ड एक्टिविटी देखने मिलेगी। कोई भी करेक्शन अगर आता है तो अभी 22,800 यानी 22,800 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है तब जाके मार्केट में और वीकनेस बढ़ सकती है। अदरवाइज हमें लगता है कि मार्केट 23,000 से लेकर 22,800 के रेंज में एक अच्छा सपोर्ट या अच्छा बेस बना सकता है, और वापस से हम यहाँ पे एक अपवर्ड एक्टिविटी देख सकते हैं। तो कोई भी करेक्शन अगर आता है तो उस करेक्शन में यू शुड लुक फॉर टेकिंग सम कॉन्ट्रा बेट्स इन द मार्केट्स। और कॉन्ट्रा बेट्स आई एम टू से कि आप उन स्टॉक्स में खरीदे जहां पे फंडामेंटल्स आर वेरी स्ट्रांग, और जब मार्केट गिर रहा हो तब जाके आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा सा अच्छा अल्फा भी मिल सकता है। साथ ही साथ हमारे वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, न्यू प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, तो यू विल सी बहुत सारे स्टॉक केसेस है। ऐसे अनसर्टन मार्केट में, अनसर्टन एनवायरनमेंट में आपको स्टॉक केसेस में इन्वेस्ट करना
मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रूटफुल होता है। तो अगर आप वहां पे अगर जाके कुछ जो आपके पसंदीदा ट्रैवल एंड टूरिज्म है, या तो केमिकल्स है, या तो इवन आई कैन से हॉस्पिटल्स के कुछ हमने बास्केट्स बना के रखे हैं, आप उनमें अगर इन्वेस्ट करते हो तो हमें लगता है कि जो आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में जो आपके रिटर्न्स रहेंगे वो और भी बेटर हो सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ओवर टू यू। Thank you, Shrikant sir. Thank you everyone for joining our webinar today. We hope you found our webinar insightful. A quick reminder before we wrap, follow us on Telegram, Instagram, and Twitter for regular research updates and stock ideas. Stay tuned for our upcoming webinars. Thanks once again for being with us today. Happy investing. See you next time.